So next, critically examine John Rawls' theory of justice. This is one of the most classic question that OPSC asks in every alternative year. So previous year question, it got a previous year question and most important one. So okay, Rawls' theory of justice re, what will be the ideal introduction? First, John, ଆମେ introduce କରିବା କି ଜୋନ୍ସ ରଲ୍ସଙ୍କର theory of justice ଟା କଣ intro ରେ କଣ ଲେଖିବା basic concept କାହାର ରଲ୍ସ justice ର ଠିକ ତ ରଲ୍ସ theory primary aim କଣ ଥିଲା what is the primary aim to achieve social justice ଆଉ ତାଙ୍କ justice ଟା justice as fairness केवल जस्टिस कले भी हबनी ना खाली जस्टिस टा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ फेयर ହେଇଥିବା ଦରକାର ସବୁ सोसाइटी रो ସବୁ पोजीशन रे कि सोसाइटी रो समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ऑल कम्युनिटीज ପାଇଁ सेटा फेयर ହେଇଥିବା ଦରକାର खाली इक्वालिटी कर देल तो हबनी तो लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक तो सेटा भी तो जॉन्स रॉल सेटा को तो इंट्रोडक्शन में हमें कोन ना बेसिक कांसेप्ट को लिखि देले ओके नेक्स्ट वी हैव टू राइट इन डिटेल कि से जस्टिस को अचीव करिवार जो प्रोसीजर कहले से प्रोसीजर को हमें केमती फॉलो करिया तो सब फर्स्ट जॉन्स रॉल्स कौन कहले जॉन्स रॉल्स को थ्योरी कौन तो एटा हमें तो आंसर दे देछु बट मु तुमको एटी लिखि दोछि जे बुझि दोछि केमती तो फर्स्ट रॉल्स गोटे हाइपोथेटिकल कंडीशन गोटे कहले तांको हिसाब रे दुईटा गोटे हाइपोथेटिकल कंडीशन ताको कहंती ओरिजिनल पोजीशन ओके ओरिजिनल पोजीशन कोन एटा गोटे एम्प्टी पोजीशन जो थर के वेयर पीपल आर चूजिंग द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एठी हमें पीपल कोन करबे कलेक्टिव है के आसीबे they will choose the rules and structure of society but here is the clause that without knowing where they will be end up in that society तो ये गोटे एमती हाइपोथेटिकल कंडीशन कहले कहले लोक आसिक रूल बनैबे नियम सब लोक माने तांको पय नियम बनैबे बट से माने ना तांको कंडीशन भीतर जणे नथिबो काई जेतले हमकु आम कंडीशन ऊपर जणे नथिबो देन आमे नियमटा को ठीक बनैबा फेयर बनैबा काई कि ना से नियमटा आम ऊपर भी लागू होबो इट विल अफेक्ट अस अफेक्ट पीपल टू से आमे कोन एमती नियमटा बनैबा से नियमटा आम ऊपर अफेक्ट हो से आमे कोन करिया नियमटा केमती फेयर हो केमती बेटर हो सेटा को ध्यान देबा आउ गोटे कथा कोन कहले ओरिजिनल पोजीशन अनदर थिंग इज कोन कहले veil of ignorance व्हाट इज दिस veil of ignorance जेमती कहले एठी जो पीपल आसी कि रूल्स बनाउथिले से पीपल माने जो जस्टिस रो डिसीजन एठी नेबे जो नियम गुडा मनेबे से बनेबे विदाउट knowing their own social status wealth तांको तांकर किछि जणे नथिबो एठी से veil of ignorance रे से कोन कहले फर्स्ट ओरिजिनल कंडीशन पीपल माने आसी नियम बनेबे आ से नियम रे तांको जणे नथिबो जे से सोसाइटी रे कोठी एंड हेबे आ veil of ignorance से माने थिबे veil of ignorance मींस कोन they completely they have completely lack of knowledge about themselves से तांको विषय किछि भी जानना तांको स्टेटस कोन तांको वेल्थ कोन तांको जेंडर कोन किछि नांती काहे ना दे डोंट नो इफ दे विल बी रिच पुअर वेल्दी और सिक कि एटा को गोटे नियम को प्रिविलेज ग्रुप रे नाहंती तांको तांको विषय जणा नै तो सेटा कोन veil of ignorance कोन सो कोन यार क्रक्स कोन if we don't know our position in society
we would more likely to create a fair and just rules. आमको जदि आम सोसाइटी आम कौटी रहा कौ पोजिशन जना जना ना ताले आम फेयर और जस्ट रूल ही बनेबा ना कहीं आमको तो जना ही ना तो से आम एमती नियम बनेबा जोटा आमको एफेक्ट करियो तो ठीक अच्छे तो यहाँ से कहले आउ नेक्स्ट कौन तार आउटकम कौन ये दीटा हो गले आउटकम कौन रॉल्स थ्योरी आउटकम कौन से दीटा की प्रिंसिपल कहले गोटे हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल कौन से कहले जे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी each person has the equal right ସମସ୍ତଙ୍କର right same right ଅଛି each person has equal right and her second कौन कहले second कहले difference principle कौन कहले social and economic inequalities are acceptable only if they benefit least advantageous society तो ये से distributive justice कथा कहले जदि सोसाइटी रे किछि डिसएडवांटेजेस ग्रुप अछंती तांको पई आमे किछि स्पेशल प्रोविजन आनी पारिबा पुअर एंड वल्नरेबल को पई जेमति कोन कहली लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक इट इज समहाउ अफर्मेटिव एक्शन कथा कहउचंदी एबे जो करेंटली हमर जो रिजर्वेशन अछि इज समहाउ लिंक टू रूल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से कोन कहले जदि गोटे सोसाइटी रो डिसएडवांटेजेस ग्रुप को पई आमे किछि एक्ट करिवा को चाहू जे किछि एक्स्ट्रा प्रोविजन करिवा को चाहू देन वी कैन डू दैट कॉल्ड द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इट इज अलाउड एटा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रो पार्ट तो तांको हिसाब रे जस्टिस हेते बेल होबो ना जे सोसाइटी जो माने डिसएडवांटेजेस ग्रुप रे अछंती तांकर भी सेति की एडवांटेज सेति की बेटर वेलफेयर होथवा दरकार तो एगुडा गला तांकर बेसिक थ्योरी बट आंसर पजारछि तो क्रिटिकल एनालाइज तो व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आम दीटा देखा तो एठी क्रिटिकल स्ट्रेंथ कौन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस रे एटा कौन से सब फेयरनेस एंड इक्वालिटी कथा कहथिले फेयरनेस एंड इक्वालिटी नेक्स्ट कौन नेक्स्ट आ गोटे कौन कहले सेटा मॉडर्न सोसाइटी रे एटा रिलेवेंट इन मॉडर्न सोसाइटी कौन पे एटा रिलेवेंसी अछि ना हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज अछि तो ये इनइक्वालिटीज को डील करिया पे हम रूल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ही दरकार सोसाइटी रे इनइक्वालिटी आमे केमति कहबा केमिति कमे परिया थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो जस्टिस रूल्स सही कथा कहले ना थ्रू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बट व्हाट आर द क्रिटिसिज्म भी कौन तो के क्रिटिसिज्म हो से गोटे आइडियल पोजीशन कथा कहले स्टार्टिंग रो जो कहले ओरिजिनल पोजीशन तो आइडियल ओरिजिनल पोजीशन ना तो एटा प्रैक्टिकली पॉसिबल की प्रैक्टिकल रे कहीं से कौन कहले जे पीपल विल मेक लॉ दे डू नॉट नो अबाउट देयर बैकग्राउंड सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड बट इन रियलिटी एटा संभव कि एटी दुनिया रे केही भी नथिबे कि जाकू तार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कथा जणा नथिबो जणा ही थिबो ना तो रियलिटी रे एटा गोटे यूटोपिया टाइप रही गला एग्जिस्टिंग करूनी जिंस आइडियल जिंस केमते एग्जिस्ट करियो देन व्हाट आर द आउ कोन क्रिटिसिज्म रे पारिबो ओवर एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से केवल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ही सबू को माने केवल से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऊपर फोकस कले ओवर एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रे कोन से कहले जे एनी फोकस ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस
neglected the fairness से कहले जे आमे रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा एठी कहले ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रे बट को प्रोसेस रे हबो सेटा को ग्राउंड रे हबो he does not tell about anything से खाली कहले डिसएडवांटेजेस को ग्रुप रे रीडिस्ट्रीब्यूशन हबो बट रीडिस्ट्रीब्यूशन टा को केमती करियो काहाटू नै के काहाकू दबो सेति पई रॉबर्ट नॉजिक ही वन ऑफ द मोस्ट critic of Rawls theory. You can quote him as an critic, Robert Nozick. Robert Nozick, the distributive जो जोटा हमर रहिला रॉल्स करो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तार एग्नेस्ट रे कोन कहले any form of redistribution that violate individual right okay you can quote Robert Nozick here and the most important thing that in every answer you have to be quote some of thinkers okay next कोन नेक्स्ट आउ कोन से बहुत लिबरल बायस रे कहले कोन लिबरल बायस रे कहले से कहले लोकन को तांका ओरिजिनल पोजीशन ने जणा नथिबो तो से जो नियमटा बनेबे सेटा फेयर हितो बट यू नो ना नेचर ऑफ द मैन करो नेचर टा कोन से को सब बेले जस्ट एंड फेयर रूल बनेबे कि नो तो एमिति भी बहुत लिबरल है कि भाबी कि कहि देले जे समस्त आसी कि फेयर एंड जस्ट रूल बनेबे सेटा भी नो ना तो सेठी एठी आउटे भी एग्जांपल हमें दे परा रॉबर्ट नॉजिक देन माइकल सैंडल से भी कौन कले जस्ट एठी से केवल इंडिविजुअल ऊपर फोकस कले रॉल he totally ignored the importance of community distributive justice कहला भीतर तो से केवल इंडिविजुअल ऊपर फोकस कले ना से तो कम्युनिटी कथा भूली ही गले देयर इज नो रोल ऑफ कम्युनिटी बट हम इंडियन सोसाइटी रे कम्युनिटी तो बहुत रोल अछि तो एठी कंटेम्पररी एग्जांपल कोन है जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस रे कंटेम्पोरारी इश्यूज तो हमें कौन कंटेम्पोरारी इश्यूज रे एठी एग्जांपल दे परिया to address inequality the high level of inequality exists in Indian society it can only be addressed with the help of Rawls theory of justice कहीं ना से redistribution कथा कहले affirmative action कथा कहले positive discrimination कथा कहले next climate justice किछि अछि climate justice रा एटा केमती तो climate change रो सबटू mostly affected by की है the global south what are the countries of global south the developing nations कहीं की ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नो मैक्सिमम फायदा माने डेवलप्ड कंट्री माने ऑलरेडी उठै सारलानी तो पर कैपिटा कार्बन एमिशन डेवलप्ड कंट्री मानकर बहुत अधिक as compared to the global south so according to the Ralph theory of justice that the developed nation should compensate the developing nation तो climate justice तो केति बेले हो ना okay here all the we talk about the critic strength and weakness and contemporary issues okay you can quote this in conclusion you can conclusion ने तुम्हें ताकू एंड केमती करिवो एंड करिवो सब बेले जहाँ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन थिवो ताहा ताकू बेसिस कर एठी कैन एंड विथ जेमती आमे एठी कंटेम्पररी इश्यूज कथा कहले कंटेम्पररी इश्यूज एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रो कंपैरिजन okay we'll see the next question number